Imagine you have a dream, whether you want to go to हज और उम्रा टू सऊदी अरेबिया या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री का टूर करने जाना चाहते हैं, राइट? अपने बच्चों को किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना या फिर एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना। बट हमेशा आपको एक ही चीज़ आपके इन ख्वाबों को पूरा करने से रोकती है, वो है आपके फाइनेंसेस। बहुत से लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने से पहले सिर्फ फाइनेंसेस की वजह से एक कदम पीछे ले लेते हैं, क्योंकि या तो वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फाइनेंसेस, और उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती, और दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकें। So this small thought, this small fear and these small practices can stop you from chasing your dreams. But what if I told you that having a financial literacy is not that much hard as you think? So let's dive down deep into this topic. So in many households, women grew up hearing, तुम अपने फाइनेंसेस को खुद क्यों मैनेज कर रही हो, और वाई यू आर सीकिंग योर ओन फाइनेंसेस। तो हमारे घर के मर्द इन सब चीज़ों को देख लेंगे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ योर लाइक ब्रदर और सन, और लाइक वी कैन से योर फादर, राइट? But what I think is that financial literacy is not about being rich or poor, man or women, but it is about being financially literated or liberated about your own expenses, right? Women के अपने expenses भी होते हैं. They can pay their own bills, they can pay for their own clothes, for their own food, or for their own activities, fun activities we can say, right? Or they can also have some of their miscellaneous, we can say, spendings as well, right? So related to this topic, let me share with you a story, right? There was a girl named Sarah. Sarah was a kind of like hardworking, caring, and intelligent girl. But one day, her husband lost his job, and at that day, Sarah realized that how important it is for her to know about financial literacy. Sarah को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि how she can pay her own bills, or how she can pay for their like food, or for their own necessities, daily necessities, food or bills, something. But from that day, Sarah took a financial literacy course, whether we can say from YouTube or from other websites. And उस दिन के बाद से Sarah just learned how to manage the daily expenses, or how she can do the daily budgeting. So she and her husband don't have to face any kind of problems in the future. And it was a life-changing moment for her, we can say. So financial literacy works the same way for everyone. जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस देना शुरू नहीं करेंगे, और जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखना, उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं करेंगे, उस दिन तक आप जो है इसी परेशानियों में घिरे रहेंगे कि आपको अपने पैसे किस तरह से सेव करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, और कितने खर्च करने हैं और कितने बचाने हैं, राइट? सो वी ऑल थिंक दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ हार्ड, right? Complicated, we can also say. But financial literacy can be divided into 4 parts. What is coming in? कितने आपके पास पैसे आ रहे हैं, और what you are gaining, right? In the form of your salary or pocket money, we can say, or in the form of gifts. What is leaving? कितना आप spend कर रहे हैं in the form of your bills, your daily necessities, or anything you are spending your money on, right? What you are saving, how much money you are saving in your banks, or in your home, right? We can say, or in like your lock in which you save your own money, right? And what you are investing, right? If you have a side hustle, or if you have a small food business, we can say, or a small clothing business, we can say. So what money you are investing on those businesses, so that you can have more money in the future in the form of profit, we can say, right? So financial literacy can be divided into 4 parts. As I told you, what's coming, what's going out, what you are investing, and what you are saving. और कुरान में भी हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आगाही दी गई है। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, और इट इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट,
बट नो, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमें कुरान पाक भी आगाह करता है। जैसा कि सूरह इसरा की आयत नंबर 26 से 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने पैसे को फजूल खर्च ना करो, राइट, सेव दैम वी कैन से, क्योंकि द वेस्टफुल्स आर द ब्रदर्स ऑफ द डेविल्स। सो कुरान पाक हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने पैसे एहतियात के साथ खर्च करने चाहिए। हमें अपने फेथ पे बिलीव रखते हुए, हमें अपने रिलीजन पे बिलीव रखते हुए, हमें अपने अल्लाह पे बिलीव रखते हुए किस तरह से अपने पैसों को एहतियात के साथ खर्च करना चाहिए, उसको किस तरह से सेव करना चाहिए, उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, सो डैट वी कैन हैव मोर बरकत इन आवर स्पेंडिंग्स। I once met a woman named Amina, right? Vamna once told me कि अगर मैं कमाती ही नहीं और अगर मेरे पास इतने सेविंग्स है ही नहीं, so what is the point of planning or budgeting your money? Or in the last of every month she end up like having no money, or she always like borrow money from her husband, and it was like a crucial moment for her, like depending on even a little penny or a little rupee on her husband, right? But one day she started to write down these points in her, we can say, notebook, that what is she spending or what is she gaining from in the form of money from her husband, right? And after that day, Amna just came to me and told me that I didn't know कि इतने थोड़े पैसे जमा करके और इतना छोटा अमाउंट कलेक्ट करके मैं इतनी कैपेबल हो सकती हूँ, सो डैट आई कैन हैव माई ओन सेविंग्स और माई ओन इन्वेस्टमेंट्स, राइट? सो दैट मोमेंट और दैट वी कैन से दैट फेस चेंज्ड Amina a lot. And Allah also reminds us in Quran, Allah will not change the condition of those peoples until those peoples will not change the conditions within themselves. This ayat is quoted from Surah Ra'd, ayat number 11. So before you move on from this video, just remember 4 of these points, right? Start taking notes of what you are gaining or spending. जब आप लिखना शुरू कर देंगे, from that day you will realize that what is the importance of your money, where you are spending and from where you are gaining, right? और वो हिसाब, वो मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल लिटरेसी will make you capable of anything that you can do in your life. Furthermore, start saving your money. Even it can be a small amount of money, we can say 100 rupee, 200 rupees or even 50 rupees can change your life. But one thing, consistency is the key. जब तक आप अपने पैसों को डेली जमा करना शुरू नहीं करेंगे, इट विल बी नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। सो आई विल गिव यू अ इम्पॉर्टेंट टिप हेयर इज दैट के इफ़ यू आर लाइक सेविंग 50 rupees from like October, from 1st of October, so you have to keep it consistent, right? 50 on 1st October, 50 on 2nd October, 50 on 3rd October. So when there will be consistency, there will be like more relief for you, there will be like more satisfaction for you, that you will be having a lot of money in the coming days. So before ending this video, I will give you a small advice as well. Reflect, write and implement. जब तक आप खुद को जानने की कोशिश नहीं करेंगे that what you want or how much money you want or how much saving or investments you want, you will be having a kind of exhaustion in your own selves, right? So reflect what you want, write it down in a notebook and just implement it in your daily life. But remember, reflection alone is not enough. What further you have to do is to take a real action, which I will be discussing in my next video. So stay connected, stay tuned. Thank you.